अस्सलाम वालेकुम। केपीएस दिन भर न्यूज बुलेटिन लेकर मैं मजीद शीरी आपकी खिदमत में हाजिर। मुल्क के अफवाज को जंग से मुतल्लिक तमाम तर जरूरियात को तरजीह की बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। मुल्क की हिफाजती सूरत हाल को यकीनी बनाने और इसको हर लिहाज से मजबूत बनाने के लिए कोई कोताही नहीं की जाएगी। राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल कायम, लोग मुतमईन रहे। अमन बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी को भी सूरत हाल से निमटने के लिए फौज तैयार। मामूली हरकतों से घबराने की जरूरत नहीं। शुमाली कमान के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल। उड़ी में मारे गए दरअंदाजों से चीनी साख्त M16 राइफल की बरामद की गैर मामूली फौज। लाचिंग पेड़ों पर मिलिटेंट दरअंदाजी की कोशिश में मसरूफ। कामयाब मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशनों से पाकिस्तान मायूस। चीनी साख्त की राइफल बरामद होने से चीनी फौज और पाकिस्तानी मिलिटेंटों के माबेन गठजोड़ के बारे में कुछ कहना काबिल वक्त होगा। तफसीलात के मुताबिक उड़ी में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान 3 मिलिटेंटों की हलाकत के बाद बारामूला में SSP बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फौज का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्स ने उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दरअंदाजी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान जुमेरात को मारे गए 3 अस्करियत पसंदों से चीनी साख्त M16 साल्ट राइफल बरामद की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की राइफल को बरामद करना फौज के लिए गैर मामूली है। फौज के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC मेजर जनरल अजय चांदपुरी ने मीडिया से मजीद बात करते हुए कहा, very much for joining us today. As you are aware that based on multiple credible inputs from various sources that included military intelligence, Jammu Kashmir police and our own sources on ground, yesterday we have foiled an infiltration bid in the area of Kamal Kot in Uri sector from Pakistan occupied Jammu and Kashmir, in which a total of 3 foreign terrorists have been neutralized along with recovery of assault weapons and ammunition as is displayed in front of you. So what we'll do is, to my left is the commanding officer of the unit that has carried out this operation. He will give you a brief on the salient aspects. Thereafter, we will cover certain aspects which are relevant in this development. This operation was carried out in extremely challenging terrain. It has got dense undergrowth. The weather was extremely foggy with heavy rain and the entire area is mined. So the multifarious challenges which were faced in the conduct of this operation could be well appreciated. Yeah. Thank you, sir. Good morning to all. Jai Hind. I would be briefing you about Op Mrityunjay based on specific intelligence from the military intelligence, Jammu and Kashmir police, other agencies as well as own sources, along with our own forward observation by the troops deployed on the line of control in the sector, which includes the troops of the Border Security Force, which had spotted suspicious movement in this area in this period. So based on these, Operation Mrityunjay was launched on 24th August in the Kamalkot area of Uri sector. The period of the operation was under inclement weather in terms of heavy rains and dense fog. And also a note on the terrain. The terrain is a difficult terrain in this area with undulations, steep gradient, thick undergrowth and dense vegetation, as well as a number of minefields. In this context, own troops that comprised of our ambush parties, small team ambush parties and surveillance detachments inducted into this area using stealth to their designated locations. To commend the action, own teams were not picked up by the enemy's surveillance devices and surveillance mechanisms. Own teams were deployed in this location for over 25 hours, and at 7:50 AM on 25th August, the own teams spotted infiltrating terrorists crossing the line of control. At this moment, the team commander recited the ambushes based on the progress of the movement of the terrorists. The movement of the terrorists was ascertained by using the latest aerial and ground-based sensors and surveillance equipment.
And as the terrorist movement progressed, own teams kept readjusting their ambush locations. At around 8:45 a.m., the terrorists came into the killing ground at 40 to 50 meters from the own ambush. At that moment, own ambush engaged the terrorists by firing onto them and also displayed higher standard of junior leadership, tactical acumen and fire control. The terrorists retaliated to own engagement. In this brief exchange of 15 minutes, 3 Pak terrorists were neutralized and their bodies along with the weapons were observed lying in the minefield. At this moment, the own teams kept the area under observation so as to check for the remnants of this terrorist group. Thereon, once the area was secured and sanitized, own teams undertook search in the feasible areas within the minefield and recovered 3 killed terrorists along with the weapons and other stores. The search is still on because of the constraints of the minefield, and right now mine clearance measures are being undertaken to ensure proper search. Till now, this Operation Mrityunjay has yielded in 3 terrorists killed and also in the recovery of 2 AK series weapons along with 1 Chinese M16 weapon and the ammunition of these weapons and other stores. It has also come to light that these terrorists were well kitted and prepared for infiltration, and also their build and gait indicates that they had undergone formal military training. During Operation Mrityunjay, own troops displayed highest standard of professionalism and courage. Also, all the latest and the new generation surveillance equipments and weapons were put to optimum use during the course of this operation. Thank you. हाँ जी, हिंदी में बोल देते हैं, हिंदी में अलग से ठीक है, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर मेरा बात कर अबुर आलूदा मौसमी सूरत हाल के बीच महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अबुर आलूदा मौसम के साथ गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। इधर जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के नतीजे में दरख्तों और बिजली तारों को नुकसान पहुंच गया। जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं से दरख्तों और मकानात को नुकसान, बिजली का निजाम दरहम बरहम। जम्मू कश्मीर में आए रोज जिलजिले के झटके महसूस होने से लोगों में को माहिरीन का इजहार तशवीश। 4 रोज में 11 मरतबा जिलजिले के झटके महसूस किए गए, ताहम कहीं से भी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अस्करी फंडिंग मामला, स्टेट तहकीकाती एजेंसी की अनोखा कार्रवाई। मुत्तहिदा अरब अमारात से मुल्क बदरी के बाद दिल्ली में एक मुलजिम गिरफ्तार। अस्करी सफों में नौजवानों को भर्ती करने के लिए 4 अस्करियत पसंदों के खिलाफ चार्जशीट दायर। मवेशियों में जलद की कांटा की बीमारी का फैलाव, कश्मीर और जम्मू सूबों के लिए टास्क फोर्स तश्कील। जेके साइंसदानों के साथ साथ जानवरों की परवरिश के महकमों के दीगर इरकान करेंगे ताकि इस बीमारी के फैलाव पर हकीकी वक्त में निगरानी की जा सके और इसके कंट्रोल के लिए हिकमत अमली तजवीज़ की जा सके। इसके अलावा जानवरों में मुतदा इमराज की रोकथाम और कंट्रोल एक्ट 2009 की दफा 6 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में तयशुदा मजबूती सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद। मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के लिए फंड्स की मंजूरी, निचली सतह पर अफसरों की पॉलिसी इससे बिल्कुल बरअक्स। गवर्नर इंतजामिया के लिए मामला तवज्जो तलब। दीजिए आपने मेजबान मजीद शेरी और कश्मीर प्रेस सर्विस के पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह निगहबान।